Um, अभी का जो समय है फॉर बैटरीज फॉर स्टोरेज फॉर मोबिलिटी इट इज वन ऑफ द बेस्ट phases that India is seeing in terms of technology advancement because of all the government policy regulatory bodies के support के कारण बहुत सारा काम चल रहा है. तो if you ask me I would not say कि एक limited जगह पर there are multiple things that are happening together. बैटरी के टर्म्स में सेल भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को इवेल्युएट कर रहे हैं. समवन इज वर्किंग विद एलटीओ कि कोई जिंक पे काम कर रहा है, कोई सोडियम पे काम कर रहा है. In terms of batteries, there are lots of things that are going. थर्मल लेवल पे काम चल रहा है, स्ट्रक्चरल पे काम चल रहा है, इलेक्ट्रिकल पे काम चल रहा है, बीएमएस पे बहुत सारा काम चल रहा है. कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड बीएमएस इंडिया में बन रहा है, मॉसफेट बेस्ड बीएमएस बन रहा है, डेजी चेन बीएमएस बन रहा है. All things are happening in parallel, and good thing is that lots of new age entrepreneurs are coming and they are helping. The fresh graduates, जो पहले खो गया था कि अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज पहले जाते तो लोग they bifurcated manufacturing as a boring segment. So class के जो घिसू जो तेज लड़के रहते थे they would go there, but all these rankers जो उनके लिए there was no jazz in manufacturing. So right now storage and mobility has brought lots of jazz. अब आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए, वहां पर देयर इज अ सेगमेंट दैट इज वर्किंग ऑन ऑल दिस थिंग्स. सो हम लोग थोड़ा फंडामेंटल से ग्रो कर रहे हैं. वी हैव सीन अ वेरी गुड मार्केट अपटेक इन 17 18 19. हमने काफी डेटा पे काम किया, डिस्कॉम लेवल पे डेटा पे काम किया था, हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे डेटा पे काम किया था. हर तरह का हार्मोनिक्स समझा था, उनका किस तरह का पावर फैक्टर का प्रॉब्लम होता है. सो वी वर्कड ऑन लॉट ऑफ दीज थिंग्स. राइट नाउ वी आर वर्किंग फ्रॉम फंडामेंटल. तो हमें ये दिखा कि टू मेक अ गुड बैटरी, लाइक लेट्स री इन्वेंट व्हाट वी हैव बीन डूइंग एंड द नेक्स्ट फेज वुड बी वेरी वेरी डिफरेंट. सो आपका इलेक्ट्रिकल कैसे बिहेव कर रहा है, पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे बिहेव कर रहा है, वी आर रीलर्निंग इट. हमने होम स्टोरेज के लिए काफी सारे बैटरीज पायलट के लिए डिप्लॉय भी किए हैं. वी हैव सीन गुड रिजल्ट्स, but what we envisage is that there is huge scope of work improvement of probably technology right now. So inverted अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएमएस पे काफी काम कर रहे हैं हम लोग, आईओटी पे काफी सारा काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल पे काफी काम कर रहे हैं, थर्मल पे काफी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पे काफी काम कर रहे हैं, एंड प्रोसेसेस पे भी काफी काम कर रहे हैं. सो डिजाइन ऑफ कोर्स इज अनदर सेगमेंट वेयर वी रियलाइज्ड कि इंडस्ट्रियल डिजाइन बहुत जरूरी है, इट्स वेरी क्रिटिकल. तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं. सो इंडियन मार्केट का जो पॉलिसी इज वेरी पॉलिसी ड्रिवन. सो स्टोरेज की पॉलिसीज हैज बीन कंड्यूसिव एट टाइम्स इट इज नॉट सो कंड्यूसिव. प्राइसेस हैव आल्सो सीन अ कर्व. सो प्राइसेस वर वेरी हाई लास्ट ईयर. सेल प्राइसेस अगर आप देखेंगे, द प्राइसेस हैव गॉन डाउन रिसेंटली. तो and the policy implementers, they realize over the time they have to shift to storage. So I would not say कि अभी exponential शुरू हुआ है, but then we are slowly moving towards a point जहां पर after which there is no turning back. So उसके लिए गवर्नमेंट ने, फॉर एग्जांपल, there are lots of schemes that government is pushing. पहले उन्होंने सौभाग्य स्कीम पुश किया था, अभी लार्ज स्केल में स्टोरेज का पुश कर रहे हैं वो लोग. और होम स्टोरेज से ज्यादा पहले इंडस्ट्रियल लेवल पे काम काफी सारा शुरू होगा, वेयर लार्ज स्केल, बिकॉज सोलर के टर्म्स में वी हैव डन अ लॉट. नाउ द ट्रांसमिटेंट इज नॉट कैन नॉट बी डेल्ट बाय सोलर. सो वो एनर्जी अगर सेव करना है, सो देयर स्टोरेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट प्राइसेस के कारण. सो दिस इज नॉट समथिंग न्यू विच आई एम टेलिंग यू. मतलब वो सबको पता है कि क्या क्या स्टोरेज से हो सकता है. इट्स जस्ट दैट कि प्राइसेस वर नॉट conducive earlier. धीरे धीरे the prices are dipping. At the same time technology is also advancing and the prices of electricity has gone up. So in together they will make it possible. I think अगले 2-3 साल में it will take a very steep curve, upward curve storage, and with different technology it will be fun. You have a EMS where you can sync generators, you can sync some other energy system and then energy storage with solar. So let's hope कि आने वाला टाइम काफी इंटरेस्टिंग रहे. थैंक यू सर. Okay.